Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed, you can see exercise 13.1 up to you can see question number 5th. Right now in this video we are going to move ahead from that. That means we are going to discuss this video from question number 6. So this question के अंदर let me just first read it. So a small indoor greenhouse you can see is made entirely of glass panes, right? So यहाँ पे एक small greenhouse बनाया है, indoor greenhouse. So that is made up of glass panes. So glass से मिलकर बनाया हुआ you can see now held together with tape. So यहाँ पे glass panes को आप देख सकते हैं tape के through you can see उनको held किया हुआ है, एक साथ जोड़ा हुआ है, right? Now further you can see it is 30 centimeter long. So that is the length given here. 25 centimeter wide, that is the breadth here, and 25 centimeter high, that is the height. So यहाँ पे हमें length, breadth और height given है. Now you can see all the three dimensions are different. तीनों अलग अलग है. That means this small indoor greenhouse is a cuboid, right? So let me just first draw that. Now we know that it is made up of rectangles. So ये जो glass panes हैं ये क्या है rectangular shape में है, right? So let me just draw another rectangle here like this. Now simply join the edges like this. Now you can see यहाँ पर एक cuboidal small greenhouse मैंने बना दिया जिसकी length जो है that is given to us as 30 centimeters. Then the breadth is given to us as 25 centimeter and the height is given as again you can see 25 centimeters, right? So 30, 25 and 25, these are the dimensions, right? Now इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास. सो यहाँ पे ग्लास जो है आप देख सकते हैं टोटल 6 ग्लास पेन्स लगेंगे तब एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनेगा. सो जो कि इस पूरे क्यूबॉइडल बॉक्स का एरिया है वही ग्लास पेन का भी एरिया होगा, राइट? सो वही ग्लास का एरिया होगा. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस greenhouse will be the area of the glass, right? So यहाँ पे हमें indirectly find out क्या करना होगा, the total surface area of this cuboid, right? Or you can say the greenhouse. Now second part में हमें also we have to find out that how much of tape is needed for all the 12 edges. अब यहाँ पे आप देखेंगे 12 edges. So यहाँ पे 12 edges कौन सी है? Let me just show you here. So आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, right? Then you can see 5, 6, 7 and 8. 8 edges, then you can see 9, 10, 11 and 12. So आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड के अंदर 12 साइड्स होती हैं जो कि सिमिलर क्यूब की भी 12 साइड्स ही होती हैं, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एजेस भी बोलते हैं, राइट? सो टोटल 12 एजेस होती हैं और यू कैन से 12 साइड्स होती हैं एक क्यूबॉइड के अंदर, राइट? नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप देख सकते हैं यहाँ पे L, L, L और L, ये तो लेंथ है, यू कैन सी दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. Then you can see ये वाली जो है ये क्या है, breadth है. So 1, 2, 3 and 4, right? तो ये आपके पास क्या होगी, breadth होगी. So आप देख सकते हैं अब ये जो vertical है ये क्या आपके पास height. So 4 times height here. So आप देख सकते हैं 4 times L, 4 times breadth and 4 times height. So total 12 edges हो गई. So 4H plus 4B plus 4L. That means 4 times the length, 4 times the breadth and 4 times the height. So this is going to be, you can see the 12 edges here, right? Now let us start this question from the first part first. You can see, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, इस cuboidal box or you can say the greenhouse का area, right? So the total surface area. Let me just start the solution here. So the first part here, let me just change the marker. So the total surface area of greenhouse, you can see is 2 bracket LB plus BH plus HL, right? We know how to calculate the total surface area of a cuboid. So this is the formula. अब यहाँ पे मैं directly substitute करने वाला हूँ 2 into now length into breadth. So what is length here? You can see that is 30 centimeter, right? Now multiply by breadth. So यहाँ पे आपके पास breadth कितनी है? That is 25. Now put a plus sign. Again आप देख सकते हैं breadth कितनी है आपके पास? That is 25 into height. So height कितनी है आपके पास? That is again 25. Plus height is 25 and length is 30. Now you have to simply solve this. Up 30 into 25. So 25 into 3 is 75 and then put a 0. Plus 25 into 25, that is 625. Now
25 into 3, that is 75, and a 0, so that will be again 750. Now simply you have to add them, then multiply by 2. So यहाँ पे सबसे पहले इनको add करते हैं. So what it will be is, you can see, let me just add them. So 0 plus 5 plus 0, that will be 5. Then 5 plus 2, 7. 7 plus 5, that will be 12. So 2 and a 1 carry. So 8 plus 6, that is 14. 14 plus 7. So that will be 21, right? Or you can just cross check. So 7 plus 6 is 13. 13 plus 1, 13 plus 7, 20 plus 1, 21, right? So अब यहाँ पे मैं इसको 2 से multiply करूँगा. So that will be 2125 into 2, right? So that will be, you can see 2 5 to 10, 1 carry, 2 to the 4 and 1 5, 2 1 to 2, 2 to the 4. So 4250. Getting my point? So 4250, let me just correct that, centimeters square. So this is going to be the area of this, you can see, glass. You can see here, right? Area of greenhouse, or you can say the glass. Both are the same things. So that was all in the first part of this question, right? Now let us just directly move on to the second part as well. So let me first make some space here. I'm going to rub this. Now let me just solve out the second part of this question here, right? Now जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे total 12 edges हैं. So how much tape is needed here? So हर edge पे आप देख सकते हैं मुझे tape लगानी पड़ेगी, so that you can hold those glass panes, right? So यहाँ पे कितनी tape लगेगी, जितनी इस edges की length होगी, right? So total सभी को मैं add कर लूंगा. So you can see the total length of edges is, you can see, 4L plus 4B plus 4H. आपको मैंने बताया यहाँ पे 4 times length आ रही है, then 4 times breadth आ रही है, और 4 times height आ रही है, right? So 4L plus 4B plus 4H. अब तीनों में आपके पास क्या कॉमन है? 4. So in the bracket that will be L plus B plus H, right? Now simply you have to substitute the values of length, breadth and height into this formula, right? So let me just do that. So यहाँ पे अब क्या आएगा आपके पास? 4 into length कितनी है आपके पास? That is 30. Breadth कितनी है आपके पास? That is 25. Again height is 25, right? So 25 plus 25, that is 50. 50 plus 30, that will be 80, right? Now 4 into 80, that will be, you can see, 320, right? 4 8 is 32 and 0 as it is. So 320 centimeter, that will be the total length of the edges. As well as you can also write the total length of, you can say, the tape, right? That is required for the 12 edges, right? So ये जो है, you can see 320 centimeter, इतनी tape होनी चाहिए आपके पास, so as to hold these glass panes together, right? So you can see this is how you have to solve such type of questions here. So students, let us move on to the next question now. So you can see question number 7 here is given to us as, you can see, Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. So यहाँ पे you can see एक Shanti Sweet Stall है जो कि order place कर रही है for making cardboard boxes, right? So cardboard box बनाने के order place कर रही है, you can see, for packing their sweets. So इनको क्या चाहिए? cardboard के box चाहिए so that they can pack their sweets. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 sizes of boxes were required. So 2 size के box required थे यहाँ पर. You can see the bigger of dimensions, you can see 25 centimeter into 20 centimeter into 5 centimeter. So जो बड़ा dimension का जो box है, that is having the dimensions as, you can see, length, breadth and height given to us here, right? Now you can see, and the smaller of dimension 15 into 12 into, you can see, 5 centimeter. So आप देख सकते हैं दोनों, एक तो बड़े बॉक्स की और एक छोटे बॉक्स, दोनों की डायमेंशंस हमें यहाँ पे गिवन है, राइट? सो दिस वर रिक्वायर्ड बाय, यू कैन सी, शांति स्वीट स्टॉल, सो दैट वो अपनी जो स्वीट्स हैं उनको इन बॉक्सेस में पैक कर सके, राइट? सो दिस इज देयर रिक्वायरमेंट. नाउ फॉर ऑल द ओवरलैप्स, you can see 5% of the total surface area is required extra. So आप देख सकते हैं जो कार्डबोर्ड के बॉक्स बनेंगे, you can see, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है. दैट मींस द कार्डबोर्ड जो बॉक्स बनेंगे दैट आर ऑफ द शेप क्यूबॉइड, राइट? सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. नाउ यू कैन सी, दिस इज अ बॉक्स हियर जिसके अंदर आप स्वीट्स को प्लेस कर सकते हैं, राइट?
whatever the suite is, right? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि इसको एक्स्ट्रा सपोज बॉक्स का जो ऊपर वाला बंद करने वाला बॉक्स है वो भी तो चाहिए होगा ना बनाने के लिए, सो उसमें भी कार्डबोर्ड लगेगा। सो ऐसी कवरिंग के लिए उन बॉक्स पे 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए उनको, राइट? So this is how you can see the extra amount of cardboard is required for the overlaps. So overlaps से आप consider कर सकते हैं कि extra जो बॉक्स को कवर करने के लिए बॉक्स चाहिए वो भी कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है, राइट? नाउ यू कैन सी इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सपोज कर लीजिए कि इस कार्डबोर्ड के अंदर सपोज कर लीजिए इतना एरिया कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका चार्ज कितना है ₹4। सो टोटल जो सभी जो हमें कॉस्ट निकालनी है कार्डबोर्ड की रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े और छोटे डायमेंशन दोनों बॉक्स कितने कितने चाहिए 250 बॉक्सेस, राइट? सो 250 बॉक्स बड़े वाले चाहिए, 250 बॉक्स छोटे वाले डायमेंशंस के चाहिए। तो टोटल 500 बॉक्सेस रिक्वायर्ड प्लस यू कैन सी एक्स्ट्रा 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, राइट? सो यहाँ पे हम पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे टोटल 500 बॉक्सेस का, देन वी विल फाइंड आउट द 5% ऑफ दैट। सो 5% उस टोटल सरफेस एरिया का वो किसके लिए होगा? सभी बॉक्सेस के ऊपर कवर लगाने के लिए, बॉक्स लगाने के लिए, उनको बंद करने के लिए, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू हियर। सो वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड व्हिच विल बी जस्ट अप्लाइड ऑन टू द शांति शीट सॉल्व, राइट? सो कितना चार्ज लगेगा उनको कार्डबोर्ड का, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट अस डू दिस। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट किसकी दी हुई है, बिगर डायमेंशन वाले की, उसको सॉल्व करते हैं। सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशन हियर। So let me just find out the total surface area of bigger dimension, you can see box, right? So that will be calculated by 2LB plus BH plus HL, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ये फॉर्मूला प्लेस करूंगा and will simply calculate the, you can see dimension, the total surface area of that box. Let me just cross check it. So that is exactly the same. So यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले L into B. So what is the length here? आपको यहाँ पे length given है, you can see of bigger dimension box, that is 25 into, you can see what is the breadth here, that is 20 plus breadth and height, you can see that will be 20 into 5 plus height and length, so that will be 5 into 25, right? So you will get whenever you place it. So now 25 into 20, that will be 25 to the 50 and a 0. So that will be 500. Let me just correct that. Now 20 into 5, that will be 100, and 5 into 25, that will be 125. Now simply you have to add them. So that will be, you can see 5, then you can see 2, then further you can see 1 plus 1, 2 plus 5, 7, 725. Now let me just multiply it by 2. So 2 5 is 10, then 1 carry 2 to the 4 and 1 5, then 2 7 is 14, right? So 1450 centimeter square. This is going to be the area of, you can see the larger box, right? Or you can see bigger dimension box, right? Now similarly what you have to do is also find out the total surface area of the smaller dimension cardboard box, right? So let me just do that, but before let me just make some space. So now you can say the total surface area of smaller dimension box. So again the formula will be the same, that be 2LB plus BH plus HL, right? Now again यहाँ पे हमें जो smaller dimension का box है उसकी भी length, breadth और height given है. So let me just simply substitute that. So आप देख सकते हैं यहाँ पे length कितनी है, that is 15 into breadth, that is 12 plus breadth is 12 into height is 5, then height is 5 and length is 15, right? So अब यहाँ पे आपको solve करना है, यहाँ पे 15 into 12, right? So what it will be, let me just check out. So 2 5 is 10, 1 carry, 2 into 2 and 3, that will be 15, so 180, right? Plus 12 into 5 is 60, then 5 into 15 is 75, right? अब यहाँ पे आपको इनको simply add on करना है, then you can multiply them by 2, right? So 2 into, let me just add them, so that will be 5, then further 7 plus 6, that is 13, 13 plus 8, so that will be 8, 9, 10, 11, 21,
right? So 2 will be the carry, so 2 plus 1, there will be 3, right? So 315 will be the total. Now you have to multiply it by 2. So 2 5 is 10, 1 carry, 2 2 is 2, and 3, 2 3 is 6. So 630 centimeters square, right? So this is going to be the total surface area of the smaller dimension box. Getting my point? Now as given in the question, you can see 250 boxes of each kind. यानी कि bigger box भी कितने चाहिए? 250. Smaller box भी कितने चाहिए? 250. So let me just simply add the total area of both the boxes and multiply it with 250, right? So दोनों के add करने से और 250 से multiply करने पे total 500 box हो जाएंगे. 250 of both. So let me just do that. So let me just make some space. Now you can see, let me just find out the total surface area. Let me just again rub this. The total surface area of 250 boxes of each type, each kind, right? So that will be, you can see 250 multiply by, now bracket में मैं दोनों को ऐड कर देता हूं. So you can see सबसे पहले जो smaller वाला, larger वाला था, उसके जो total surface area था, that is 1450. Then smaller वाले का 630. आप देख सकते हैं 250 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 250 ईच हो गए ना. सो मैंने पहले क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया एंड डायरेक्टली मल्टीप्लाइड इट विद 250. सो चाहे तो आप इंडिविजुअली इसको 250 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 250 से कीजिए, देन ऐड कीजिए, या फिर दोनों को ऐड करके कॉमन मल्टीप्लाई इट बाय, यू कैन सी 250. सो दैट विल बी द सेम आंसर. सो यहाँ पे आप सिंपली मुझे क्या करना है, 250 नाउ सिंपली इनको ऐड करना है, राइट? सो दैट विल बी 0, देन यू कैन सी 3 plus 5, that will be 8. Then 6 plus 4, that will be 10, and 1 carry, so that will be 2, right? So 2080 into 250, right? So now you can see 2080 into 25 कर लेता हूं, then this 0 will be as it is, right? So यहाँ पे इनको multiply करना पड़ेगा. So 5 0 is 0, 5 8 is 44, so 5 2 is 10, right? Now 2 into 0 0, 2 8 is 16, 1 carry, 2 0 0 1, 2 2 is 4, right? So you can see there will be 10, there will be 2. And 5. So 52000, right? So 52000 and a 0 of this, right? So you can see 5,20,000. You can see centimeter square. That will be the total area of 500 boxes of, you can see, smaller and larger dimension together, right? So ये तो हुआ total surface area of the 500 boxes, right? In which 250 are of larger dimension and 250 are of smaller dimension, right? Now further what we have to calculate actually is the cost of the cardboard for making this, you can see, the boxes, right? So let me just rub this. Now also if you just remember that 5% of this total surface area will be required for making the cover of the boxes, right? The overlaps. So let me just also calculate the 5% of this. So let me just rub this. If I just rub this down, now you can see, so यहाँ पे सबसे पहले cardboard, you can say, now let me just tell you that cardboard required 4 overlaps, right? So overlaps का मतलब उसके boxes को cover करने के लिए. We know that it is given 5%. So यहाँ पे सबसे पहले I'm going to find out the 5% of this total, right? So 52, 4 times 0 into 5%, right? So percent का मतलब divide में क्या होता है? 100. So let me just now reduce the zeros. So now you have to multiply 5200 by 5. So ये क्या होगा? 5% हो जाएगा इसका. So let me just multiply. You can see 2 zeros as it is. Now 5 into 2, that will be 10. 1 carry, 5 5 is 25, and 1 26. So 26,000. You can see centimeter square extra cardboard चाहिए होगा, right? So अगर together मैं इनको जोड़ दूं, so that will be the total cardboard required, right? So you can see there was for overlaps. Now you can see then total cardboard required together with the overlaps, right? So मैं दोनों को ऐड करूंगा, इसको और इसको. So that will be, you can see 52, 4 times 0 plus 26,000, right? So let me just add them. So 52, 4 times 0 and 26,000, right? So that will be 0 0 0 6, 2 and 2 4, 5 4 6
3 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तो हुआ टोटल कार्डबोर्ड जो कि सभी बॉक्सेस टुगेदर विद देयर ओवरलैप्स हो गया, राइट। नाउ जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर मैं इसका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की बात करूं तो उसके कितना चार्ज लग रहा था, ₹4, राइट। सो यहां पे मुझे टोटल कार्डबोर्ड पता चल गया, दैट इज 54600। नाउ लेट मी जस्ट रब दिस। अब यहां पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लेट मी जस्ट टेल यू द टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, राइट। सो टोटल कॉस्ट जो है ऑफ कार्डबोर्ड वो निकालनी है। ना मुझे पता है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना ₹4 चार्ज है, राइट। सो यहां पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करूं तो 1000 कहां जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि मैं 1000 को क्या लिख सकता हूं 1 into 1000। सो अगर मैं 1000 को डिवाइड में भेज दूं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का मुझे पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट है, राइट। सो इतना सा एरिया अगर मैं 1 सेंटीमीटर मान लूं, सो दैट विल बी, यू कैन सी 4/1000, राइट। सो दैट मीन्स कि अगर मैं 4/1000 बोलता हूं, सो ये किसका है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का है। नाउ टोटल जो कार्डबोर्ड का एरिया दैट इज 5463 टाइम्स 0। सो यानी कि मैं उसको क्या कर दूं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं। सो दैट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, राइट। सो आप देख सकते हैं कैसे मैंने कैलकुलेशन की, सिंस मुझे क्या गिवन था कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का चार्ज है ₹4। सो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 into 1000। सो दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का जो कॉस्ट है वो कैसे कितनी हो जाएगी, दैट विल बी, यू कैन सी 4/1000 रुपीज, राइट। सो अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है। सो टोटल जो कार्डबोर्ड का एरिया दैट इज 546,000 उसकी कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय दिस रेट, राइट। जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस। सो यहाँ पे 3 zeros कैंसिल आउट, दैट मीन्स 546 into 4। So let me just solve this. So 546 into 4. So 4 6 is 24. Then 2 carry, 4 4 is 16, 17, 18. 1 carry, 4 5 is 20, and 1 21. So 2184 rupees. This is going to be the charge of, you can see the cost of the total cardboard required to make the boxes, the cardboard boxes, so that you can see Shanti Sweet Stall can place the sweets in them, right? So that was all in this question here. So students, now let us move on to the last question of exercise 13.1. That is, you can see question number 8, right? So let us discuss this. तो यहाँ पे आपको given है that Praveen wanted to make a temporary shelter for her car. So Praveen ने अपनी कार के लिए एक temporary shelter बनाना है, एक तरह से shed बनाना है. So by making a box-like structure with टेरापुलिन, राइट। सो एक यू कैन सी एक कवर आता है टेरापुलिन का कवर, जिससे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनानी है, सो एज दैट यू कैन सी कवर ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। सो यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, टेरापुलिन की 4 तो साइड से कवर होना चाहिए और टॉप ऑफ द कार कवर होना चाहिए, यानी कि बॉटम जो है उस पे टेरापुलिन लगाने की जरूरत नहीं है ऑन द फ्लोर, राइट, बिकॉज फ्लोर पे तो कवर करने की जरूरत नहीं होती कार को। सो यानी कि एक तो टॉप है और 4 साइड्स है जिससे कार को कवर कर रहा है विद द टेरापुलिन, विद द बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, राइट। नाउ यू कैन सी अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल। सो टेरापुलिन को जो एजेस से स्टिच करना होगा उसके चार्जेस नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल है, सो नॉट included here and therefore negligible, right? So how much terrapolin would be required to make the shelter of height 2.5 meter? So यहाँ पे जो shelter की height है उसकी कितनी दी हुई है, that is 2.5 with base dimensions is 4 into 3. So base यानी कि floor की dimensions यानी कि क्या होती है, length और breadth होती है floor में, right? Let me just make a box like structure, that is a cuboid like structure, right? So that will be like this. Now let me just connect the edges here. So आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस पे टेरापुलिन की जरूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे बेस पे टेरापुलिन की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो यानी कि एक तो टॉप हो गया और 4 साइड्स हो गई, राइट। सो दीज आर द रिक्वायर्ड टेरापुलिन शेप्स है, राइट। सो इस तरह से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाए। अब हाइट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे that is given already. So कितनी हाइट गिवन है, that is 2.5 meters, right? अब यहाँ पे बेस की डायमेंशन गिवन है, बेस में क्या क्या आ रहा है आपके पास, लेंथ आ रही है और ब्रेड्थ आ रही है, राइट।
सो लेंथ कितनी गिवन है आपको, दैट इज 4 मीटर एंड जो ब्रेड्थ है दैट इज 3 मीटर्स, राइट। सो लेंथ और ब्रेड्थ की डायमेंशन दी है 4 क्रॉस 3, राइट। नाउ हमें यहाँ पे लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, हाइट भी पता है, सो वी कैन नाउ कैलकुलेट द, यू कैन सी एरिया ऑफ द 4 sides and the top, right? So अगर आप together total surface area of a cuboid की बात करें, so what was the total surface area of a cuboid? Now total surface area of cuboid is, we know that 2lb plus bh plus hl, right? अब यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं फर्दर, तो 2lb plus 2bh plus 2hl, right? So ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। नाउ बेस के ऊपर टेरापोलिन की लेयर की जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉप और 4 साइड से ही कवर करना है। सो मैं यहाँ पे बेस का L इंटू बी क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा यहां से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2lb है, तो एक LB मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूं, सो 1lb बचा। सो नाउ वी हैव टू जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इनटू दिस फॉर्मूला, राइट। सो व्हाट इज लेंथ हियर, दैट इज, यू कैन सी 4 मीटर इनटू, अब इसने मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, दैट इज 3 प्लस now 2 into b into h, right? So what is base? So base यहाँ पे कितना है आपके पास, 3 into height. So what is height? That is 2.5 plus आप इसे 2hl. So let me just now solve 2hl. So 2 into h. What is h? That is 2.5 into length. You can see L. That is 4. So simply आपको इसको solve करना है. So let me just do. So 4 into 3 that is 12. Let me just correct that. Plus 2 into 3 is 6. 6 into 2.5, let me just check out. So 2.5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, so 5 6 is 30, 0 3 carry decimal as it is. Now 6 2 is 12, 13 14 15. So 15.0 बोल लीजिए या 15 बोल लीजिए. So that will be 15. Now further 2 into 4 that is 8. 8 into 2.5. Now let me just do that. So 2.5 को अब 8 से मल्टीप्लाई करना है. 8 5 is 40. Again decimal 4 carry, then 8 2 is 16 and 4 20. So इसको आप 20.0 को 20 बोल सकते हैं. Now simply you have to add them, right? So what it will be, 2 plus 5 7 plus 0 7, then 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. So 47 meter square is going to be the area of this, you can see, terrapolin required for the 4 sides and the top to cover the car, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रवीण ने शेल्टर बनाया था for her car by making a box like structure with terrapolin. So उसका एरिया क्या है terrapolin का, how much terrapolin will be required, that is 47 meters square, right? So that was all in this question here, and we have come to an end to this exercise as well, right? So that was all in this video.